So, hi everyone. Am I audible? Like, do let me know in the comments, guys. Am I audible or not? I hope I am audible. Check. Okay. Good evening, Yash. Am I audible, Yash? Let me know. Good evening, colleague, or good evening. Okay, great. ठीक है. So, hi everyone. Welcome to the bootcamp session. Like it's a day 5 of the bootcamp. And we have so far covered till day 4, which where we covered about the fundamentals of CPP programming, C++ programming, which includes basic concepts, hoops like that. And now we are moving forward, and today we have a project day, and actually I'm very excited to know more about what exactly we are building on the project. So we'll wait for another couple of minutes, and then we are going to start. Meanwhile, I will invite the mentor. Just a second. Hello, sir. Am I audible? Yeah, hi Sanskar. Hi, sir. कैसे हो Hi, आप? how are you? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताओ. एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया. I hope everyone is there in the session. या वो ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे. I'll drop one announcement again, Okay, sure, and sure. they will be joining in next 2-3 minutes. Then we can start. Got it, got it. So sir, before that, So, like क्या आज हम करने वाले हैं exactly? yeah, so basically आज हमारा काइंड ऑफ प्रोजेक्ट क्लास है जिसमें हम आज अभी तक जो चीज हमने पढ़ी है वो हम कवर करेंगे. एक दो चीज हमारी आई गेस पेंडिंग रह गई थी. लाइक वी जस्ट हैव टू गिव अ क्विक brief about I guess polymorphism and abstraction if I'm not wrong. वो ज्यादा नहीं, हम बस वो concept समझेंगे. We will have a quick understanding why do we use them, right? इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी उसके. हमारा कंसंट्रेशन अभी है कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर ऊप्स के कंसेप्ट से के बेसिस पे बनाए. लाइक इट इट Hmm. इट इट्स अ प्रोजेक्ट व्हिच इज gonna be ऑफ ऑफ लाइक स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट होगा. एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे हम प्रोजेक्ट बनाने में. एंड आप काफी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं. एंड इट विल बी फन. या Okay. Sounds exciting, quite exciting, sir. So, okay, we'll wait for another 2-3 minutes. I'll drop one announcement again, and then श्योर we श्योर can start with the session. Okay. Meanwhile, आप एब्सोल्युटली. screen share कर दो. I will present it over the screen. हाँ, जस्ट गिव मी 1 minute. Sure. Meanwhile, guys, if you have It's any visible. doubt, It's no, it's not visible. you can ask. No, no, it's not visible now. Mm. Let me just share it again. I think it's not able to share it. Just a second. Okay. This image only be filled once. So you have only submitted assignment from one time. From one time. You can try again, Dhruv. I guess this issue has been already fixed. You can check out the Google form again,
I guess this issue was concerned 2 3 days back, and we already resolved this. And but to check, let me check. It's okay again. Just a second. Uh, Bootcamp assignment. Okay. So yeah, it's already been resolved through. You can check once. You can do the multiple submission based on the assignments. Yeah. Okay. Yeah, it's visible now. Yeah. Okay. Okay. We can start with the session. Like people are joining. Sure, sure. Okay. In the meantime, other people join. I'll just give a quick recap and the pending topics, right? I guess other people will also join by then. Okay. Cool. So, hi everyone. Those who have joined, welcome to the session. Today we are having the fifth day of the workshop, right? And today we will be understanding, uh, like not understanding, but we'll be building up, right? We will be now building up a project which we, whatever we have learned over the days about the fundamentals of C++, about the concept of OOPS and all. So we're going to combine our knowledge today and we're going to put up it in a project and we're going to build something out today. Okay. And it will be very like useful for you guys to understand that when you are doing things in industry in real time, it will be useful for you to understand how things are actually working over there, right? तो काफी आप लोगों को सीखने को मिलेगा, आपको पता लगेगा कि कैसे काम होता है एक्चुअली में इंडस्ट्री में। तो आप लोग समझने की कोशिश करना प्रोजेक्ट को, आप साथ साथ बना भी सकते हो। एंड आज का जो असाइनमेंट आप लोगों का होगा वो यही होगा कि आपको भी एक प्रोजेक्ट बनाना है साथ साथ में। अब आप यहाँ पर मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ टू बी क्रिएटिव, राइट? सो आई एम बेसिकली क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन सम सिस्टम। लेट्स से द प्रोजेक्ट टुडे वी कैन मेक इज अ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे और उसको हम बनाएंगे एक तरीके से। अब आप फ्री हो कि आप उसको किसी और तरीके से कोई और मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हो, तो यू कैन वर्क ऑन द सेम बेसिस एंड यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑफ योर ओन। यू कैन लर्न फ्रॉम हियर एंड यू कैन अप्लाई द नॉलेज योरसेल्फ। अब आप कुछ भी बना सकते हो, आप एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, आप एक कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, इस इन फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से, ठीक है? तो एक बार प्रोजेक्ट पे भी आते हैं, बट उससे पहले एक दो चीजें हम वापस से रिवाइज करते हैं। हमने ऊप्स के बारे में जो पढ़ा था, ऊप्स से पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो क्लासेस हमारे पास क्या थी? क्लासेस एक ब्लूप्रिंट था हमारे पास, और ब्लूप्रिंट से हम लोग एक अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, राइट? एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द पिलर्स ऑफ हूप्स, राइट? तो हमने इनहेरिटेंस समझा था और हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन समझा था। एंड इनहेरिटेंस क्या था हमारे पास? पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। जब एक क्लास दूसरे क्लास को परमिशन देता है कि आप मेरी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो शेयर कर सकते हो, आप आपके जो क्लास परमिशन देगा शेयर करने के लिए वो पेरेंट क्लास होगा, और जो शेयर करेगा वो चाइल्ड क्लास होगा, राइट? एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट आई गेस encapsulation. So encapsulation was, I gave an example over here. So we basically bind the data together, right? And we do not allow our data to be accessed outside the class. हम एक security maintain करके रखते हैं अपने data की। तो हम सारे के सारे जो भी हमारा data होगा, जो भी आप ये मान लो कि जो आप नहीं चाहते हो कि कोई और एक्सेस कर ले आके, तो आप उसको प्राइवेट रखोगे, राइट? बट उसको एक्सेस करने का तरीका होगा उसका। यू हैव टू बी लाइक अंडरस्टैंड दिस पार्ट ओवर हियर कि आपको कुछ चीज कुछ वेरिएबल्स का डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना क्लास के बाहर, बट यू हैव सम पर्टिकुलर वे ऑफ गेटिंग टू चेंज दैट डेटा। लाइक कोई आके ऐसी हर किसी को एक्सेस नहीं कर सकता, एक प्रॉपर तरीका होगा अगर चेंज भी करना है तो हम इनकैप्सुलेशन से अचीव करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन भी काफी सेम बेसिस पे ही है हमारे पास। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ हमें कोड में क्या करना होता है कि हम सिर्फ जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हम उतनी ही दिखाते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन हम छुपा के रखते हैं, ठीक है? So we are not exposing entire
फंक्शन ऑफ द क्लास, राइट? जैसे इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि अब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा हमारे पास कि let's say if I'm driving a car. So when I press the pedal of the car and accelerate the car is moving in the forward direction. Now I'm not concerned ki when I'm pressing the pedal, what is happening in the engine, what is happening inside the car, right? I'm just concerned कि I have to press the pedal and I have to just move the car ahead. The car will start moving ahead, right? तो मैं concerned नहीं हूँ कि acceleration काम कैसे कर रहा है. Similarly, अगर आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, एक हेडर फाइल अगर इंक्लूड कर लूँ मैं math.h. सो अगर मैं यहाँ पर math.h इंक्लूड करता हूँ तो मेरे पास एक फंक्शन आता है जैसे पावर फंक्शन हो गया. अब पावर फंक्शन जो है वो क्या करता है? पावर फंक्शन बेसिकली जस्ट इफ आई जस्ट hover over it, it is basically gonna take two inputs. ठीक है, दो पैरामीटर्स लेगा ये. सो दिस इज एन एग्जांपल ओवर हियर. अभी जो पावर फंक्शन होगा, इफ आई जस्ट let's say int x equals to, let's call it 2 comma 3. Okay, so something like this. If I just try to go on the definition of this, so यहाँ पर देखो पावर फंक्शन यहाँ पर कुछ काम कर रहा है, मुझे नहीं पता वो कैसे वो वर्क कर रहा है, वो कैसे अपने इंटरनल जाके हाउ इट इज बेसिकली कैलकुलेटिंग द पावर ऑफ टू नंबर्स. व्हाट आई एम कंसर्न विद इज दैट कि ये जो पावर फंक्शन है, मुझे बस पावर फंक्शन कॉल करना है और मुझे दो नंबर पास करना है और मेरा जो आउटपुट है वो आ जाएगा. आई एम नॉट कंसर्न हाउ पावर फंक्शन इज वर्किंग. सो बेसिकली दिस इज हाउ यू प्लान टू राइट योर कोड ओवर हियर कि आप अपने कोड को जो जो डेटा है, जो जो कोड का वर्किंग है, वो आप एक्सपोज नहीं करते हो. ठीक है, आपको कोई और आपने एक लाइब्रेरी बनाई, आप उस लाइब्रेरी के फंक्शंस को एक्सपोज नहीं करके आप सिर्फ बोलोगे कि मेरे फंक्शंस को आप लोग यूज कर लो, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है. आई एम बेसिकली जस्ट हाइडिंग द information from the user over here. So that is basically the concept of abstraction over here. Okay, and the last one is the polymorphism. So polymorphism क्या बोलता है हमें? Polymorphism basically says that कि uh, let me just share the screen over here. Just one second. The screen, yeah. So polymorphism क्या बोलता है मुझे? Polymorphism. So यहाँ पर जो मेरे पास ये वर्ड है, poly मतलब many होता है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे याद रख लेना. And morph मतलब forms. ओके, सो मेनी फॉर्म्स. अगर मेरे पास कोई मेथड या कोई ऑपरेटर, जैसे मान लो मेरे पास कोई ऑपरेटर या कोई मेथड हो गया, वो अगर अलग अलग जगह पर अलग अलग बिहेव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ प्लस. तो प्लस ऑपरेटर मेरे पास क्या है? प्लस ऑपरेटर अगर मैं 1+2 करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? सम आएगा ना. सम ऑफ 2+1 1+2 आएगा, राइट? सम आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि हेलो और प्लस वर्ल्ड करता हूँ, अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को प्लस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास तो कंकैटिनेट हो जाएगा, राइट? सो मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये भी तो प्लस साइन है और ये भी प्लस साइन है, बट ये प्लस साइन यहाँ पर डिफरेंटली बिहेव कर रहा है और ये वाला प्लस साइन यहाँ पर डिफरेंटली बिहेव कर रहा है. सो इट इज बेसिकली जस्ट एडिंग टू इंटीजर्स. व्हेन जब दो इंटीजर्स के साथ कॉल हुआ तो ये उसको ऐड कर रहा है, लेकिन जब दो स्ट्रिंग्स के साथ कॉल हुआ तो कंकैटिनेट कर रहा है. सो एक ऑपरेटर या एक मैं मेथड अगर एग्जांपल लूं कि मान लो मेरे पास कोई मेथड है, जैसे हमने पढ़ा हुआ मेथड ओवरलोडिंग, राइट? मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है हमारे पास कि मेरे पास एक मेथड होगा जो कि अलग अलग जैसे फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गोना टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ओवर हियर ताकि आप लोगों को समझ आए. मान लो मेरे पास एक मेथड है, लेट्स कॉल इट void मेथड 1. ओके, सो यहाँ पर ये मेथड है, एक मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक और मेथड है, दोनों का नाम सेम है. ओके, so I'm gonna create another method void method 1 like this. अब मेरे पास दो मेथड सेम नाम के हो गए, लेकिन ये जो मेथड है, ये मैं मेथड बोल रहा हूँ कि ये मेथड एक इंटीजर इनपुट लेगा. लेट्स कॉल इट x ओवर हियर, राइट? अगर मैं इस मेथड को यहाँ पर कॉल करता हूँ, मेथड 1 को कॉल करता हूँ, तो अब मुझे पता कैसे लगेगा कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये भी मेथड 1 है, ये भी मेथड 1 है. जिस मेथड को मैंने कॉल किया है उसका सिग्नेचर इससे मैच हो रहा है. सिग्नेचर क्या है? दिस वन. लाइक मेथड 1 इज हैविंग नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप.
So this is basically matching with this. So this is gonna get executed over here. इसके अंदर अगर मैं सी आउट लिख देता हूँ कुछ करके, मान लो हेलो लिख देता हूँ, तो ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई इंटीजर पास कर देता हूँ, मान लो मैंने पास कर दिया 5, तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने इसको बोल दिया कि सी आउट करवा दो एक्स को, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, अब 5 आ जाएगा। बिकॉज अब इसका सिग्नेचर जो है वो इससे मैच कर रहा है। अब ये मेथड सेम है, लेकिन वो अलग अलग जगह पर अलग अलग बिहेव कर रहा है। सो बेसिकली इट इज टेकिंग मेनी फॉर्म्स, राइट? सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ओवर हियर। अब आगे भी इसके और कंसेप्ट होता है, वो हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं इतना भी। बट आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग तरह का हो सकता है। हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंपाइल टाइम ओवर हियर। रन टाइम हमारे पास अलग होता है। लेकिन सिर्फ समझने की तरीका आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, कि एक चीज अलग अलग जगह पर अलग अलग बिहेव कर रही है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑपरेटर्स का भी और मेथड्स का भी। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। सो अब इन सब कंसेप्ट को हम कंबाइन करते हैं, और इन सब कंसेप्ट को कंबाइन करके हम लोग क्या कोशिश करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एक देखते हैं कि लेट्स ट्राई टू रैप आवर हेड्स अराउंड एंड अंडर, लाइक पूरा जो हमने अब तक कवर किया है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वी गोना क्रिएट अ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप लोग साथ साथ में ये वाला प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो मैं करवा रहा हूँ, तो आप साथ साथ में उसको नोट डाउन करो, साथ साथ लिखने की कोशिश करो, अपना कोड एडिटर साथ में खोल लो। एंड जो चीज मैं करवा रहा हूँ, सो आई एम ऑल्सो गोना बी डिजाइनिंग की कैसे आपको करना है ये चीज। यू कैन डिसाइड टू क्रिएट अनदर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सेम, एक सेम पैरामीटर्स के बेसिस पे आप अलग प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है। सो I'm just gonna create a new file over here, and let's call it zero, so no, 17 underscore project dot CPP. Okay, so this is my final file I'm creating over here for CPP project, and let's add the boilerplate code. Now I'm gonna create a project over here. A project basically कैसे, मैं क्या सोच रहा हूँ मैं करने का, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ हम लोगों को। सो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग ना एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो मेरे पास एक एक सिस्टम है बैंक का। ठीक है। अब मेरे पास बैंक में बहुत सारी चीज होती है, मतलब जैसे कोई मान लो एम्प्लॉय मेरे पास आया बैंक में, अब उसने काम करना शुरू किया। ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म, मैंने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जो कि बैंक में जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है, तो वो उसमें उसकी डेटाबेस में एंट्री करता है, राइट? उसको मान लो मेरे पास एक कोई एम्प्लॉय आया, लेट्स कॉल हिम एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 1 ने बैंक में अप्लाई किया, उसको सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय 1 मेरे पास, मैंने उसको डेटाबेस में ऐड कर दिया। ठीक है। अब इस एम्प्लॉय, मतलब इस बैंक सिस्टम में बहुत सारी चीज हो सकती है कि मुझे बेसिकली ये मान लो कि ये मेरे पास एक बैंक का सिस्टम है। बैंक का सिस्टम है, अब मैंने इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज मेरे पास आ रहे हैं, E1 आ गया, एक E2 आ गया मान लो, एक E3 आ गया मान लो। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज मेरे पास आ रहे हैं, मैंने उनको अपने डेटाबेस में ऐड किया। अब मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ इनके साथ। ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि जैसे मेरे पास मान लो E1 है, अब मैंने E1, नॉट E1 एक्चुअली, बट लेट्स से इस वाले सिस्टम में मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। मैं अगर मान लो मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनका डेटा अपडेट कर सकता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है। मतलब दीज आर बेसिकली द थिंग्स दैट आई एम थिंकिंग ऑफ ओवर हियर। कल को एम्प्लॉय को छोड़ के चला गया तो मुझे मान लो डिलीट करना एम्प्लॉय को। ठीक है। और क्या हो सकता है मेरे पास इस सिस्टम में, उनकी सैलरी कैलकुलेट करना। ठीक है। जो भी उनका पेरोल बनेगा, जो भी उनका होगा, तो कैसे किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, पूरे बैंक का कितना खर्चा हो रहा है ना, तो मैं पूरा वो कैलकुलेट करना है। और मान लो ऐसे भी हो सकता है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एम्प्लॉयज क्या है, सबकी आईडी क्या है, मतलब बहुत कुछ, मुझे सब कुछ एक 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 ओवरव्यू चाहिए पूरे उसका बैंक का। तो एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता हूँ मान लो मैं।
Well or not? I guess my connection broke. Can you guys let me know in the chat box? Yes, you're audible now. Am I audible? Yeah, yeah, you're audible. Okay, I guess my screen just got closed. I just saw there. Okay. Just a second. Yeah. Okay. Cool. So, whenever I'm creating such system over here, I will not, मैं सब चीज को एक चीज एक उसमें नहीं कर दूंगा क्लास में। मेरे पास एक, मान लो ये जो बैंक का सिस्टम है, या मान लो ये एक जो पूरा सिस्टम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक अलग चीज है। अब इसके अंदर स्पेसिफिकली जो ये एम्प्लॉयज हैं, ये एक अलग चीज है, राइट। मैं इनको अलग तरीके से हैंडल करूंगा। मेरे पास एक एम्प्लॉय की अलग क्लास होगी। सो इस एम्प्लॉय की क्लास में मेरे पास अलग चीजें हो सकती हैं, राइट, कि उसमें एम्प्लॉय के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा। एम्प्लॉय से जो भी चीज एम्प्लॉय का मेरे पास मुझे चाहिए, मैं वो यहाँ पर रखूंगा उस एम्प्लॉय क्लास में। जैसे मान लो एम्प्लॉय का नाम हो गया, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी आईडी क्या है, ठीक है, उसका और क्या चीज हम इसमें, मतलब जो भी चीजें मुझे एम्प्लॉय से रिलेटेड रखें, वो मैं इस एम्प्लॉय की क्लास में रखूंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक अलग क्लास बनेगी। तो इस तरीके से मैं अपने कोड को सेग्रीगेट करके रखूंगा। आई विल नॉट एंटायरली मिक्स एवरीथिंग ओवर इन इन वन क्लास, या एक जगह पर मैं नहीं रखूंगा। तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि कैसे मैं इस चीज को बनाऊंगा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करता है, और इस चीज को बनाने की कोशिश करता है कि कैसे मैं एक सिस्टम बना सकता हूँ दैट विल हेल्प मी टू मैनेज माई बैंक का डेटाबेस या बैंक का पूरा सिस्टम। ओके। सो सबसे पहले मैं क्या, अच्छा, इसमें मेरे पास, मुझे एक चीज और क्या चाहिए कि यहाँ पे, कि जितने भी मेरे पास एम्प्लॉयज होंगे, मुझे वो कहीं पे स्टोर भी करने पड़ेंगे। तो हमें इतना डेटाबेस के बारे में भी नहीं पता, डेटाबेसेस क्या है, कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा अभी के लिए, मैं सिंपल एक वेक्टर बना लूंगा। अभी आपको, अगर आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में नहीं पता तो बहुत सिंपल है, मैं साथ साथ बता दूंगा बेसिकली। बस अगर थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लेना इंटरनेट पे जाके वेक्टर्स के बारे में। बट वेक्टर्स कुछ नहीं, डायनेमिक एरेज ही होते हैं। ठीक है। सो हम वेक्टर्स क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट टू स्टोर ऑल एम्प्लॉय। जो हमने पढ़ा ना यहाँ पे E1 E2 E3 जो एम्प्लॉयज बनाए थे, वो सारे एम्प्लॉयज कहीं पे स्टोर भी तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि मुझे अगर रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम
हेलो guys, please इस सेशन आप लीव मत करना. The sir will be joining in next 2-3 minutes. Actually, there is some internet issue, so please wait for a while, and he will be joining in next 2-3 minutes. Okay. If you guys have any doubt, you can write in the comment box regarding any certification or any assignment. I will be here to answer all your doubts. Guys, please wait for another 2-3 minutes. The mentor will be joining in next 2-3 minutes. Hello, I'm audible. Hello. Uh, Hello. Yeah. Okay, Just a second. Hello. hello. Yeah. Hello. Yes, you're audible. Yes, sir. Can you Sir. hear me? Yeah, yeah, I can hear you. You're audible. Okay. Can you share my screen also? Yeah, it's visible now.
but still, I guess Okay, okay. there is some network issue. Yeah, I guess there is some internet issue over here. Like I joined. I'll try again if it get improved. Like I have the Wi-Fi is not working, right? So let me know if my voice breaks or something like that. Okay, I'll try to fix it. Oh, okay, okay, okay. Okay. Oh, Yeah. Yeah. So basically, so yeah, I was saying that first of all, we need to create a payroll system over here. So how will I create a payroll? Like what do I need in a payroll? First of all, obviously, I need to calculate the payroll of some employees. Right now, what is an employee? We need to first of all define an employee. So we will be creating a different class for employee. We will not do everything in one class only. We're gonna be creating a different class for the employee first, and we're gonna define everything related to employee over there, right? So before this, what I'll do is I'll say a class of employee will be there, and this is gonna take all the information which are related to the employee. Okay, so all the data which is related to the employee should be private, right? So what are the things that I need over here? Let's see that. So I'm gonna keep few things private over here. Let's say the ID of the employee, right? And maybe the name of the employee, name, and maybe the like what is the position of that employee over there, right? And then we can have the salary and some other things that we can think of over here. Like maybe we can also can calculate what is the benefit the employee is getting or something like that, right? So we will add those fields over here just in a second. Uh, Now, once I have all these things, I need to initialize them also, right? So how will I initialize them? With the help of a constructor. So we have already understood what our constructors are, right? So I'm going to create a constructor of employee class, and it is basically be responsible for initializing all these values, right? And I'm gonna keep it public. Now I can keep it private also, but it's on you that how do you want to do it. I'll keep my constructor public. It's completely fine. So first of all, I'll initialize. So I'm gonna say the ID. I need to initialize the name. Uh, I will also so it will be string actually. Then position and double salary. So now I need to initialize this. So right now I might have not told you this concept, but what I'm going to do is I'm going to use this operator over here. Why I'm using this? Because this ID and this ID is basically same. So I'm just basically telling it when the employee object is created in the memory, I am just referring this global ID to be populated. I'm saying that this dot ID, this ID will be equals to ID. I need to do this thing because both the names are same. Local and the global variables are basically having the same name. That's why I need to add this over here. But yes, it's a good practice. You can use this when you are initializing the values. And this basically means you are telling the that the object has been created of this particular of this particular class, and you are initializing the values in the global field which are related to this particular object which is created in the memory. Okay, that's why I have used over here this keyword. So I'm just gonna say this dot name will be name, and then same for the position and salary. Okay. So now let's work around a few things which are related to the employee. So the things which are related to the employee will go in the employee class only, right? So basically I can maybe like the how many time what is the time the employee has worked. All the things which are related to the employee will go in the employee class. That's how basically you design, right? So let's start with the
Okay, so I'm just going to create few more fields over here just to write, uh, define the benefits the employee will get, right? And maybe I can also have uh, deductions, right? And hours worked. So all these things also I'm gonna input over here, and initially I'm also gonna populate them, right? So I'm gonna say I'll also have a salary, and then I'm also gonna have a benefits. Okay, then deduction also double, and hours worked. I have just taken it double just for like you can choose to take it float also, you can choose to take it int also. It's completely on you. Okay, don't have to exactly copy the code. You can modify the code according to you. So over here, so this benefits will be equals to initially. I'm just gonna say for now I'm gonna populate it with zero for right now, and also this deductions initially they will be zero. Okay, and hours worked initially they'll be populated with zero. Okay, so these are the things that I have just created for the employee over here. Now, the things which are very which are personal to the employee. So let's say I'm gonna have some member functions over here. So let's say I will have set benefits. So this is basically related to the employee only. So I'm gonna say that okay, I'm just creating some example over here. Let's say I need to pass one variable known as health, and let's call it retirement. And this method is just gonna, this is a public method, right? So this is gonna be saying benefits will be equals to health plus retirement. Okay, so this is like a structure, like basically this will set the benefits, like how much, what are the benefits the employee is getting over here, right? And for deductions, I can basically create a method set deductions, and what are the deductions? Like say I'll have a variable known as tax. I need to input the tax over here, and I can also have insurance, right? So deductions can be over here tax plus insurance. Okay, so this is basically to set the deductions and benefits for the employees, right? Okay, now what about the, I can also create some member function that will define like responsible for the work hours, right? So I can create over here void add work hours. I'm just going to pass the number of hours over here. So whenever I call this method, the numbers that I have passed, hours worked, will be get in plus equals to in the hours. Sorry, the hours will get plus equals to the hours worked, right? So in with the help of this, I can basically determine the number of hours the employee has worked, right? Then then what about salary, right? So we can calculate, we can also define how to calculate the salaries or salary of the employee. So we can have multiple type of salaries in an organization, right? We can have gross salary, we can have a net salary, right? So if I want to calculate, I want to just get the gross salary. So this method is just going to give me the get me the gross salary over here, right? So this method will return me. So I need to basically, I can call it double. This is going to return me the salary plus
benefits. That will be the gross salary of the employee, right? And for the net salary, so get net salary. So it is gonna return me. So whatever the net salary of the employee is, get net salary. So whatever this method is gonna return me minus deductions, right? So this is how we can calculate the net salary of the employee. And what else? So we have things we have inputted here. Yeah, one more thing we can have over here. We can also say uh, print employee details, right? We can create another method to print the employee details over here. So what is it going to do? Simply, it is just going to see out, let's say the ID, okay, and then in the new line, it is going to print name. Then in the new line, it is going to print position, position, okay, and then let's say it is also going to print the gross salary. So get gross salary, right? And then for the net salary, it is just gonna get net salary and then okay. So these are the details that I want to print out of the for the employee over here, right? So yeah, I guess I have all the things that are basically I can have also one more thing over here. Uh, so I can also have a method because I would be needing it later on to check the ID of the employee, right? So I'm just going to return ID over here. So yeah, I guess I have all the things over here, and now we can proceed further. So let's go back to the payroll over here. Now, what do I need in order to calculate the payroll of a bank employee, right? So I can have various things over here. First of all, let's say employee comes with me in the bank, right? I need to basically add the employee in the database. Now there is nothing such as database over here. So what are we going to do is we just going to create a vector to store the all the employees that are being like coming in the bank and those who are got a job in the bank, right? So in a private field, I'm going to create a vector. I guess I need to include vector first. Yeah. So I'm going to say hash include vector. Now, if you don't understand vector, it's completely fine. You just follow along. Uh, Later on, you will understand it. You can go and read about it. It's simple as an array, right? So I'm going to create a vector over here and of type. So what is this vector going to store? This is going to store all the employee objects. So the type of this would be employee. Okay. It is going to store all the objects of employee type. So then I'm just going to call it employees. Okay. So I have a vector over here that is going to store all the employees objects. Okay. Now let's go back to the method that we need over here. So let's say I would be needing to create some method. So whenever the employee is admitted in or is selected for the bank job, so what methods I need? First, I can do the addition of that employee in my bank system, right? So I can create a method over here to add employee. Okay. So this method is basically responsible for adding. Now, what do I need basically? Whenever I have a system or in my, let's say in my computer screen, I have a system. So whenever I want to add an employee, so what are the things that I need to enter? Let's look at that. Okay. So I'm just gonna say
See out. I'm just gonna first ask to enter employee ID, right? I'm gonna be asking for the ID of the employee. And I need to take input in some, so I'm just going to create an ID over here. So I'm going to create an variable ID over here, and I'm going to take the input in the ID. So I'm going to say C in ID. Okay. Then I can ask for the employee, the name, right? The name of the employee. So I'm going to say C out, enter employee name, right? I need to create another variable over here. So I'm going to create a string name. So I'm going to take input in the uh, name over here. Now, if I just say C in name, so then we know that with the help of this method, only the when as soon as the space comes up, it is just going to not take an input after the space. So we are not going to use this method over here. We're going to use get line to take string inputs. We're going to use get line. So I'm going to say C in and then name. In this way, I'm going to take the name input. Also, I need for the position. So I'm going to create another variable position. And let me ask again for enter employee position. Okay, at which position he is joining at? So position. Okay. Next up, I also need the salary. So I'm going to create another variable. Let's call it salary. Now I'm going to ask for cout enter employee salary. Okay. And yeah, it's just a number, so I can just directly do C in over here. I don't need to do the get line. Okay. So yeah, once I have entered all the information, I need to basically add this in the vector that I have created, right? So I have all the information of the employee. Then what I do is I will say employees dot pushback because I need to add this entire object in the vector. So I'm going to use pushback over here. So what I need to add is I need to say employee and the ID would be ID and the name would be name, the position would be position, and the salary would be salary. So these are the only things that I have created over. So that is what I need to just send in the employee over there, right? Okay, so it is asking for the other things also. So what I'll do is by default, I'm gonna make benefits 0. I'm gonna give them default value 0, and this also as 0. And over here, I'm just gonna say benefits and our deductions, and this would be password. So there it is. Okay. Now, what is the other method that I need over here? So I have added an employee. Now I might be needing a method to maybe update the details of the employee. So let's say sometimes an employee come and he's asking that I have to change my ID, I have to change my name, I have to change anything like something like that. Okay. So we need to create I can create another method to update the information of the employee. So I'm just going to say void update employee. Okay. So what are the things that I need over here? Let's see. So first of all, whatever the employee I need to change the information of, I need to first check it does it exist in the system or not, right? How can I check that? You can choose anything. You can choose the name that does this name exist in the system? Does this ID? You can check with ID also, right? So let's go with ID. I'm gonna check with the ID that if this ID exists in my like the database, which I'm vector, which is vector over here. If this employee with this ID exists, then only I will update it. Otherwise, I'll not update it, right? So I will be first of all asking for the ID of the employee that for which employee you want to update the information for, right? So first thing I would be asking would be enter the employee ID to update. Okay, I'm going to ask this first. So I'm just going to take the input in the ID over here.
So now I need to check if this ID either exists. Does this ID exist or not? If this ID exists, then only I'll update it. Na? So I'm gonna first of all check all the objects which are present in the vector list. Okay. So I can use a for loop over here. So we can use employ, or I'll just use this auto. Auto is basically uh, it'll just take the type automatically. Okay. So I'll say let's so call it. I need to pass it by reference because I need to make the change to the original. So ampersand I on employees. Okay. So I will check if I dot ID, sorry, get ID equals to ID. If this ID matches, then only what I'll do, I will change the various things uh, about the employee. So let me just create a thing that I can change over here. Let's say health, retirement, tax, insurance, like this. Okay. So I can update all these details over here. So I will just say see out, enter health benefits. Okay. And I'm just going to say see in health. Similarly, I'm just going to copy this over here and let me just paste it over here. So retirement, and I'm going to take C in the retirement. Then we have for tax, tax deduction, and I'm going to input in the tax over here. And then we have the insurance benefits, insurance deductions, insurance deduction, and I'm going to enter it in the insurance. So these are the things that I will be checking for them, right? Now, once I have checked that if it exists or not, so I have all these things over here, right? So set benefits, set deductions, and all of these things over here. So what I can do is I can basically just directly from here, I can, uh, I'll say that whatever the employee that I'm changing this information for, I need to update it for that employee, right? So what I can do over here is I can say, so how will I find the employee from this I? Let me just rename it to employee only. Okay, not I. I'll just call it EMP, employee. Okay. So what I can do over here is I can check EMP dot. So I can basically set benefits. I can update it from here. So whatever the health that has been created and the retirement I need over here, right? So I can now set the values from here and similarly set deductions. Okay, I need to, I'll set this. Okay, deductions, and I can pass the value of tax and insurance. Okay, and maybe I'll just add a C out over here. Employee updated successfully. Just to give a confirmation, yes, it has been done, and then return. Okay. Otherwise, if I am not able to do this properly, if things don't like, if I am not able to find the employee over here, right? So what I can do is after coming out of this for loop, I can print another message also. I can say employee not found because the ID doesn't matches, right? So I can say employee not found like this. So this is how I can update my employee information. And next up, what we decided was delete. Yeah. So how do I delete the employee? So I can create another method over here. So I'll say void. Let's say I want to delete some employee from the database. Let's say he or she resigned from the company, so the bank. So I will create a method to delete the employee. So how will I delete? Obviously, I need to check on some basis. I need to check. Let's if
the employee exists. So how can I check if employee exists? With the help of ID, I can check, right? So I'll say that there will be an ID over here. So I will see out first, enter the employee ID to delete, right? ID to delete. So whatever the ID that is being entered over here, I need to check if that ID exists or not, right? So I'll just take the input in the ID over here, and I'll say for uh, okay, now I need to basically just iterate over this entire employees list, and I need to check for each one, right? So I can also, so we have seen how to use for each loop. We can also use iterators if you are familiar with that, right? Or you can check the documentation and how it works. So I can also use an iterator over here. So I'll say employee. So from the beginning, I will start iterating on the vector, and it until it is not equals to employee dot end, and then it plus plus. What I'll say if I got the ID. So if iterator get ID, okay, equals to ID. So this is basically the same that we have done above. It's just the other way of doing it, right? So if I have found the ID, then what I'll do is I will say, so there is a method in vectors that we can use. It is basically, I can say employees dot erase. So erase is basically help me to delete the element from the list over here. I can delete it, and what I can do is I can just simply say employee deleted successfully. So I have sent a message over here. If I have not found it, so after the for loop, I can also send employee not found. So I can just copy this statement over here, and I'll paste it over here. That's it. That's how I can delete the employee. Okay, next up, we decided, yeah, so we can also calculate the salary. So let's create a method for salary calculation also. Calculate calculate salary, and basically again I'm just going to use the same thing over here, but yes, we can also now dedicatedly calculate the salary. Like I don't want to be salary, so salary is something which can be calculated in a different class over here, right? So what I'll do is, just to make the code a bit more cleaner over here, what I'll do is I will create another class over here uh, above this class. Yeah. So I'm going to create another class that will be responsible for salary calculator. ठीक है, थोड़ा सा अपने कोड को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा सा और बेटर करने के लिए हम यहाँ पर एक और नई क्लास बनाएंगे जिसमें हम अपनी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सैलरी कैलकुलेट करना बहुत एक फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बोला कौन सी सैलरी हम लोगों ने बनाई है, ग्रॉस एंड नेट। सो एक हम बना लेंगे कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, और एक हम बना लेंगे नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, बस। तो हमारे पास ये अब अलग से सैलरी के लिए हमारे पास एक अलग डेडिकेटेड सेक्शन हो गया। सो कैलकुलेट नेट सैलरी ओवर हियर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जब भी ये मेथड कॉल करूंगा तो मैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा एम्प्लॉय टाइप का, एंड बाय रेफरेंस पास करूंगा बिकॉज मुझे ओरिजिनल सैलरी पर चेंज करना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट कॉल इट एम्प्लॉय। सो इस जो भी यहाँ पर मैं पास करूंगा मुझे उसकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, ये मुझे रिटर्न करेगा एम्प्लॉय डॉट गेट ग्रॉस सैलरी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा। और सिमिलरली नेट सैलरी मुझे पता है, फॉर्मूला मुझे पता, मैंने किए हुए हैं ऑलरेडी। सो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करवा देगा एम्प्लॉय डॉट गेट नेट सैलरी, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने इसको एक सेग्रीगेट कर लिया। अब मैं वापस आता हूँ अपने कैलकुलेट सैलरी पे यहाँ पर। सो अब मैं बोलूंगा कि मुझे कैलकुलेट किसकी, अब वही कैसे चेक करूंगा, एक आईडी बना लेंगे, आईडी चेक करेंगे कि क्या ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता, फिर मैं उसकी सैलरी कैलकुलेट करूंगा, राइट।
सो मैं यहाँ पे बोलूंगा एंटर एम्प्लॉय आईडी टू कैलकुलेट सैलरी। कैलकुलेट सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अ, पहले आईडी चेक करेंगे, तो आईडी चेक कर लेते हैं। कैसे भी आप चेक कर सकते हो, मैंने दो तरीके बताए हैं आपको, ठीक है। सो मैंने बोला ऑटो एम्परसेंट एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉयज। ओके। सो मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पे कि या मुझे बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ग्रॉस एंड नेट सैलरी। सो मैंने बोला अब मुझे सैलरी कैलकुलेटर जो क्लास है, सैलरी उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे एस सी। अब एस सी से मैं सैलरी कैलकुलेटर एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। सो मैंने बोला एस सी डॉट कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, ठीक है। किसकी करनी है? जो भी एम्प्लॉय पास करूंगा मैं यहाँ पर, एम्प्लॉय यहाँ पर जो भी पास होगा उसकी कैलकुलेट करनी है मुझे, ठीक है। इसको मैं कहीं पे स्टोर भी करा लेता हूँ। सो मैंने बोला एक डबल ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आई से डबल नेट सैलरी। सो ये सेम एस सी डॉट कैलकुलेट नेट सैलरी किसकी? एम्प्लॉय की जो पास होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी विल बी नेट सैलरी एंड देन वी विल रिटर्न, ठीक है। अगर नहीं मिला मुझे कुछ भी तो मैं फोर लूप के बाहर आके बोल दूंगा जो मेरे यहाँ पे फोर लूप हो गया। अच्छा सॉरी, मैंने चेक नहीं लगाया, यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा मुझे। अगर आईडी मैच हुई तभी मैं ये चीज करूंगा। तो मैं बोलूंगा इफ एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। अगर ये आईडी मिलती है तभी मैं उसकी जो सैलरी है वो अपडेट करूंगा, राइट। तो ये सारा का सारा जो मेरे पास कोड होगा वो इस इफ के अंदर आएगा, लाइक दिस, ठीक है। और अगर मुझे फोर लूप के बाहर आने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो मैं क्या सी आउट करा दूंगा? एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास सारी चीजें हो गई। अच्छा एक चीज रह गई है बस, एक और काम मुझे करना है यहाँ पे, मुझे एक जनरेट रिपोर्ट भी करना है। अब इसमें तो कुछ नहीं करना, बस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है फॉर ऑटो एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉयज। मैं क्या अब यहाँ पे कर दूंगा? एम्प्लॉय अपनी प्रिंट सैलरी डिटेल्स जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, तो यहाँ से मैं सारी की सारी सैलरी डिटेल्स प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज और कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा फॉर बेटर क्लैरिटी, एक यहाँ पर ऐसे कुछ सिंबल लगा दे ताकि मुझे समझ आए कि हाँ ठीक है खत्म हो गया, लाइक, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना जो जनरेट रिपोर्ट है वो जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो बस अब हमारे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। इसमें हमने अपने लाइक एम्प्लॉयज की पूरी पेरोल सिस्टम को पूरा बना लिया है हमारे पास। अब हमारे पास बस अब मुझे क्या करना है, इसको बस डिस्प्ले करवाना है, राइट। तो अब यहाँ पर मैं मेन में जाके डिस्प्ले, अच्छा मेन में मैं इसको और साफ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक अलग से और एक और क्लास बना सकता हूँ जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी चीजों को डिस्प्ले करवाने में, तो एक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक इससे पहले क्या कर लेता हूँ कि एक मैं क्लास बना लेता हूँ यूजर इंटरफेस। अब आपका कोड और ज्यादा क्लीन हो गया। अब मेन में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके पास ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है।
तो मैंने यूजर इंटरफेस क्लास में क्या बोला कि मेरे पास एक मेथड होगा डिस्प्ले मेन्यू का, मतलब जो पहले मेन्यू दिखाऊंगा, मुझे एक मेन्यू दिखाऊंगा मैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए कि जो जो मैंने फंक्शन बनाए हैं उनके हिसाब से मैं यहाँ पर मेन्यू में चीजें ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि सी आउट कर दो। पहले मुझे क्या प्रिंट करवाना है, ऐड एम्प्लॉय। ठीक है। उसके बाद मुझे दूसरा क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है। फिर एक और स्पेस। तीसरा मुझे क्या करवाना है, डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है। उसके बाद फिर एक ब्रेक लाइन कर दिया। फोर्थ मुझे क्या करवाना है, कैलकुलेट सैलरी। ठीक है, फिर से नया लाइन हमने किया। फिफ्थ मुझे क्या करवाना है, जनरेट रिपोर्ट। ठीक है। और एक ऑप्शन और दे देंगे लास्ट में, सिक्स वाला, जिसमें हम कर देंगे एग्जिट, कि बस हो गया मेरा काम, अब एग्जिट कर जाओ। ठीक है। तो देखो मैंने एक अच्छा सा फंक्शन बना लिया अलग से। अब मुझे ज्यादा इसमें अच्छा एक चीज और इसमें कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, एक और ब्रेक लाइन लगा देते हैं लास्ट में। एक और काम क्या करेंगे हम यहाँ पे कि एक सेकेंड। हाँ, हम एक और मेथड यहाँ पर बना लेते हैं इसके अंदर, इंट गेट इनपुट। ठीक है। अब मुझे इनपुट जो चाहिएगा वो मैं कैसे इनपुट लूंगा, नंबर्स के थ्रू, राइट। सो मैंने बोला कि मेरे पास कोई, मैं एक चॉइस दूंगा। ठीक है। और ये मेथड क्या करेगा, मेरा चॉइस में इनपुट दे देगा मुझे। ठीक है। और रिटर्न क्या करा देगा, चॉइस। ठीक है। तो मैंने एक अलग से डेडिकेटेड फंक्शन बना लिया इसके लिए। अब मेन मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेन में देखना कितना आसान हो जाएगा। और एक मैंने फंक्शन बना लिया डिस्प्ले आउटपुट का, जो मेरे पास आंसर आएगा उसको आउटपुट करवाना है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर बोला स्ट्रिंग परसेंट आउटपुट, और मैंने यहाँ पर सी आउट करवा दिया आउटपुट। ठीक है। सो ये हमारा काम हो गया सारा अभी। और अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं मेन में, और इसको बनाने को कॉल करवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा हमारे पास आगे। तो मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, बहुत सिंपल सा है मुझे। आई हैव टू बेसिकली जस्ट, आई हैव ऑल द थिंग्स रेडी ऑन द टॉप। अब मैंने मुझे कुछ नहीं करना, देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे यूजर इंटरफेस का यूआई के नाम से, और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पेरोल सिस्टम का पीएस के नाम से। ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे बार बार चीज करनी है, मतलब मैं एक इनपुट दूंगा, उसमें कुछ ऐड डिलीट जो भी मैं ऑपरेशन करूंगा, उसके बाद जब तक मैं एग्जिट नहीं करता तब तक मुझे बार बार इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। तो मैं एक वाइल लूप चला लूंगा ताकि बार बार चलता रहे। तो मैं बोलूँ जब तक ट्रू है, वाइल ट्रू, तब तक मैं क्या करता रहूंगा। देखो सबसे पहले मुझे करना है, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प्ले मेन्यू का। ठीक है। सबसे पहले मैं मेन्यू डिस्प्ले कराऊंगा। मेन्यू डिस्प्ले क्या बोल रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं डिस्प्ले करा दूंगा पहले, कि मुझे करना क्या है। मैंने बैंक का अपना पोर्टल खोला, सबसे पहले यूजर के पास क्या आएगा कि क्या करना है आपको, ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है आपको। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आएगी उसके पास। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले मेन्यू करवा दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद मैंने, अब यूजर कुछ इनपुट देगा तो कुछ उसके पास चॉइस होगी, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 जो भी इनपुट देगा, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, अब मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे मैंने बोला यूआई डॉट गेट इनपुट, ऑलरेडी मैंने बना रखा है फंक्शन यहाँ पे। ठीक है। गेट इनपुट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो भी इसके पास आएगा वो रिटर्न करवा रहा है यहाँ पे। तो मैंने उसको किसी उसमें स्टोर करवा लिया, तो मैंने बनाया इंट चॉइस, जो भी इनपुट करेगा वो चॉइस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मैं एक स्विच केस बना लेता हूँ। स्विच किस पे स्विच करना है मुझे, चॉइस पे। ठीक है। और क्या करना है मुझे, देखो ध्यान से। पहला केस क्या हो सकता है मेरे पास, उसने इनपुट क्या किया, वन इनपुट किया। ठीक है। अब जब वन इनपुट किया उसने, तो मुझे क्या करना है, कि देखो कितना सिंपल हो गया अभी ये। मैंने बोला पेरोल सिस्टम से मुझे ऐड एम्प्लॉय कॉल करना है, खत्म हो गया। कितना आसान था। अब जैसे ही मैं वन प्रेस करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो ऐड एम्प्लॉय कॉल करेगा। वो क्या बोलेगा, सबसे पहले ये पूछेगा एंटर एम्प्लॉय आईडी करो, आईडी चली गई, फिर एम्प्लॉय नेम करो, फिर नेम चला गया, एम्प्लॉय पोजीशन करो, पोजीशन आ गई।
सैलरी बताओ, सैलरी आ गई, और बस उसमें ऐड कर देगा, वेक्टर में ऐड हो गया मेरा एम्प्लॉय। कितना कितना ज्यादा ये सेग्रीगेटेड, कितना ज्यादा क्लीन कोड मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के सामने, कितना आसान हो गया है ना। अब दूसरा, अगर मान लो केस, एक तो ये केस बन गया, उसके बाद क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करना नहीं भूलना हम लोगों को, आप लोगों को पता है क्यों नहीं करना, राइट। सो नेक्स्ट अप, लेट्स से केस टू आता है मेरे पास। अब केस टू में मुझे क्या करना है यहाँ पे, आप लोग वहां पे देख सकते हो, मैंने वैसे सारी चॉइसेस लिखी हुई हैं। ये वाला जो मैंने ये बनाया था ना, टू में मुझे अपडेट एम्प्लॉय करना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पीएस डॉट अपडेट एम्प्लॉय कॉल कर देंगे। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय क्या करेगा, उससे पूछेगा कौन सा एम्प्लॉय अपडेट करना है, पहले चॉइस पूछेगा। मतलब कितना सेग्रीगेटेड कोड है मेरा अभी, कितना समझ आ रहा है, कितना साफ सुथरा कोड है ये वाला, राइट। तो ऐसे ही मैं बाकी इन्फॉर्मेशन भी सारी भर देता हूँ यहाँ पे। एंड कितने केस बनेंगे मेरे पास, 6 केस बनेंगे। ठीक है, थर्ड केस में मुझे क्या करना है, थर्ड केस में मुझे करना है अपना डिलीट करना है एम्प्लॉय को, तो मैंने डिलीट कॉल करा दिया, डिलीट एम्प्लॉयज। ठीक है, फोर्थ में मुझे क्या करना है, फोर्थ में मुझे करना है कैलकुलेट सैलरी, कैलकुलेट सैलरी कॉल करा दिया। फिफ्थ में मुझे क्या कराना है, फिफ्थ में मुझे कराना है रिपोर्ट जनरेट करानी है, जनरेट रिपोर्ट कॉल करा दिया। ठीक है, उसके बाद सिक्स में मुझे क्या कराना है, सिक्स में मुझे एग्जिट कर जाना है, तो सिक्स में मुझे कुछ कुछ कॉल नहीं कराना एक्चुअली में। सिक्स में मुझे बस यहाँ पर मैं बोल दूंगा, अगर सिक्स मेरे पास आया तो रिटर्न, कुछ जीरो रिटर्न करा, ठीक है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, लास्ट केस मेरे पास क्या होगा, सिक्स में तो मेरे को एग्जिट करवाना है। और अगर इसके अलावा, एक से लेके छह के अलावा कुछ और इनपुट किया मैंने, तो डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट में मैं बोल देता हूँ कि सी आउट कर दो, इनवैलिड चॉइस, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, सो ये मेरे पास मेरा कोड मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर कोई एरर नहीं है इसमें, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो देखो, पहले मैंने रन किया, मेरे पास क्या आ गया, क्या मुझे यहाँ पे चॉइस चूज करनी है, राइट। तो मैंने बोला ऐड एम्प्लॉय, मैंने वन एंटर कर दिया। तो पहले क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉय की आईडी बताओ, मैंने बोला एम्प्लॉय की आईडी है 100। ठीक है, उसने बोला एंटर एम्प्लॉय का नाम, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है शायद, एंटर एम्प्लॉय नेम और आईडी के बाद वो दोनों एक साथ पूछ रहा है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ऐड एम्प्लॉय में मेरे पास जो है, क्या करते हैं यहाँ पे, आईडी के बाद यहाँ पर वो एक साथ दोनों, अच्छा एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, आई जस्ट सी एन इग्नोर। ठीक है, फिर से रन करते हैं एक बार। तो मैंने बोला ऐड एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉय आईडी मैंने बोल दिया 100, एम्प्लॉय नेम बोल रहा है, तो मैंने एम्प्लॉय नेम बोल दिया मान लो जॉन। ठीक है, एम्प्लॉय पोजीशन मैंने बोल दिया मैनेजर है। ठीक है, सैलरी मैंने बोला 1000 रुपये। ठीक है, हो गया, दोबारा से लूप आ गया। अब मैं बोलता हूँ, मैंने बोला जनरेट रिपोर्ट कर दो, मैंने 5 एंटर किया, तो देखो आगे रिपोर्ट, आईडी 100 है, नेम जॉन है, पोजीशन मैनेजर है, ग्रॉस सैलरी इतनी है। अब सैलरी कैलकुलेशन वो सब चीजें फॉर्मूलाज थे जो मैंने बस यहाँ पे इनपुट किए थे, और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो मैं फिर से करता हूँ इसमें, और मैं फिर से 5 इनपुट करता हूँ, तो देखो अभी भी वो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर है। सॉरी, 5 मैंने गलत इनपुट कर दिया, ऐड एम्प्लॉय, सॉरी, दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं। अब मान लो मैंने बोला यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय करना है, हाँ ऐड एम्प्लॉय करना है, तो आईडी मैंने बोली 100, एम्प्लॉय नेम मैंने बोला जॉन, पोजीशन बोल दी मैनेजर, सैलरी बोल दी 1000। ठीक है, फिर से मैंने बोला कि वन ऐड एम्प्लॉय करना है एक और, तो मैंने बोला आईडी है 200, नेम है उसका मान लो कुछ भी बोल दो, हैरी नाम है मान लो। ठीक है,
पोजीशन मान लो डेव, और सैलरी मान लो 500। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मुझे उसको अपडेट करना है, ठीक है, तो मैंने बोला टू अपडेट करने के लिए, तो बोला कौन से एम्प्लॉय को अपडेट करना है, मैंने बोला हैरी को अपडेट करना है, तो मैंने 200 आई डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया वो हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, मैंने बोला हेल्थ बेनिफिट्स मान लो अ, कुछ भी बोल दो 10 है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स 20 है, टैक्स रिडक्शन मान लो 5 है, इंश्योरेंस रिडक्शन मान लो 10 है। ऐसे मैंने कुछ कर दिया। ठीक है, अब मैं फिर से क्या बोलता हूँ कि मुझे जनरेट करके दिया रिपोर्ट। तो देखो मेरे पास यहाँ पर डेटा आ गया जॉन का, और मेरे पास डेटा आ गया वहाँ पर है, और एक सेकेंड, पूरा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन, ओके, सो कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है, सो जनरेट रिपोर्ट में कुछ इशू आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। हम्म, हाँ, जनरेट रिपोर्ट। सो बेसिकली जनरेट रिपोर्ट मेरे पास क्या कर रही है यहाँ पे, इट इज बेसिकली जस्ट आइटरेटिंग ऑन द एम्प्लॉयज, एंड देन इट इज जस्ट प्रिंटिंग द एम्प्लॉय डिटेल्स ओवर हियर। सो अब आप यहाँ पर चलते हैं, ये क्या कर रहा है मेरे पास, प्रिंटिंग एम्प्लॉय डिटेल्स क्या कर रहा है, it is basically just printing the ID and the name and the position and the salary, and yeah, that's it. So salary and benefits, and this is returning the net salary over here. Okay, कुछ छोटा सा इशू लग रहा है मुझे इसमें, आई गेस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका जो छोटा सा इशू है मैं एक बार देख लूंगा कहाँ पर इशू आ रहा है, और मैं जब असाइनमेंट आपकी फाइल आपके साथ शेयर करूंगा, तो आई पुट अ कमेंट ओवर देयर एंड आई बी शेयरिंग विद यू कि कहाँ पर इशू था, बिकॉज टाइम काफी ज्यादा हो गया। सो आई बी शेयरिंग द दिस असाइनमेंट फाइल विद यू, आप लोग इसको एक बार लुकअप कर लेना, बट आई होप यू गेट द क्रक्स ऑफ दिस कि कैसे ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं, हाउ वी हैव डिजाइंड द पैटर्न, हाउ वी डिजाइन द आउटलाइन ओवर हियर। कितना सिंपल और कितना क्लियर कोड है यहाँ पे कि कैसे मुझे समझ आ रहा है एक्चुअली में कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली डिजाइन सम एप्लीकेशंस, दिस इज हाउ यू गो, यू हैव टू बी, इतना आपको फेमिलियर होना पड़ेगा कि आप लोग जो है हर चीज को सेग्रीगेट करे करे, सब कुछ एक ही क्लास में नहीं कर देना, आपको आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग क्लासेस को देनी होती है। ठीक है, सो या संस्कार, आर यू देयर? I will be sharing this corrected version with you guys। आज का जो असाइनमेंट हम देंगे आपको, वो आपके साथ मैं कोड में जो इशू है वो फिक्स करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाय द टाइम आपके लिए असाइनमेंट क्या है कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है आज। ओके, एंड यू हैव टू बेसिकली मेक अ प्रोजेक्ट विच कैन बी ऑन दिस सेम आउटलाइन। मतलब आपको बैंक का नहीं बनाना है, बट आपको बैंक से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हो, कोई भी मैनेजमेंट आप एक ऐप बनाओ, एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ और वो हमारे साथ शेयर करो, दैट इज द प्रोजेक्ट फॉर टुडे। Okay. Am I audible? या संस्कार। Uh, okay. Okay. So it was great. Matlab, the concept, the project which you have taught today. And guys, this is the today's last live session. We have one more live session which will be scheduled for Q&A and FAQs, all those stuff. So that would be of day 9. We will be announcing all the dates and the timings very soon. But this is the last the session today which you have, and the rest videos based on data structures will be announcing on the group, and it will be uploaded on YT on the same timing, that is on of 7 p.m. Okay. So thank you so much, sir. And I will be sharing the assignment or this code snippet which you have, oh, sorry, the code file which you have created in the group. And if students have any doubt, they are open to ask the doubt in the group या or in the या upcoming live session. श्योर। Okay. Thank you so much, sir, for the session.
and we'll see in upcoming Q&A session. Sure, sure, sure. Thank you, Sanskar. Thank you for being a great host. And thank you for everyone for joining. And एक सेशन और है हमारे अभी, उसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे लास्ट डे. एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लोग उससे पूछना. FAQs एंड काइंड ऑफ Q&A एक सेशन हमारा होगा, तो उसमें हम लोग मिलेंगे ऑन द लास्ट डे. So, thank, thank you, sir. Thank you so much. ओके एवरीवन, बाय बाय. Okay, bye, sir. Okay, guys. So if you have any doubts so far regarding certification, assignment, or the upcoming videos, you can ask here. And the rest of your data structure videos based on array, string, linked list will be announced on your WhatsApp group, and it will be also recorded. That is a self-paced learning model, and we will be sharing on the YT, and the links will be shared on your WhatsApp group and via email as well. So feel free to watch that videos as well. And thank you for joining it. Thanks a lot. Okay. Bye everyone. Bye. Bye. Yes. Bye. Bye everyone. Bye. Bye. Yes, right. There's no specific Discord community, Vineet, but you can join the WhatsApp group, which is mentioned in the comment, and even we pinned it that particular comment where it mentioned please join this WhatsApp group. So feel free to join that group. Okay. Okay then. Thank you everyone. Thank you. Bye bye.